Morality is the demand of the day, demand of the day, demand of the day. Proud to cry of the suffering humanity. Wise you be, may not harm me, may not harm me, may not harm me. But sincere success a certainty. Morality is the demand of the day, demand of the day, demand of the day. Proud the cry of the suffering humanity. You see, it's my pleasure, and as I told you, privilege and honor to be the part of GPIF team here, and in the part of the study circle with you all. And I must thank all my DDs who gave me this opportunity to express myself from this platform. And right from my introduction, it is very clear that after retirement 2020, I got associated with Proud. So my awareness is obviously very limited, and I'm not an authority on Proud, but yes, we can study together as a study circle. So as I have been asked to talk on 16 points, तो हम लोग सबको पता है कि आनंद मार्ग का जो दर्शन है वो है आनंद सूत्रम. तो इसका जो 5th चैप्टर है, द लास्ट चैप्टर ऑफ आनंद सूत्रम, वो डील करता है सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी से. तो विशेष करके इसमें जो 16 सूत्र हैं, प्रथम जो 8 सूत्र हैं वो हैं डील करते हैं समाज के साथ, एंड लास्ट जो 8 सूत्र हैं वो डील करते हैं इकोनॉमी के साथ. So this is the only difference. That is why I took that I'll start from after 8. But before we go to after 8, I think these 16 sutras are very important. And the first 8 sutras are, of course, what society is and how society moves, how society functions, and the law of social dynamics. So these are related with the first 8 sutras. And these questions will be, of course, must be answered there. And we have 8 slokas on society and 8 slokas on sutras, as I'm repeating, on economy. So there is not a single word, this is something new. There is not a single word of politics used in these sutras. Yes, Samaj is there, but politics is not there. There is no talk of left or right narrative of politics, etc. Further, society part is elaborated in various books. You all know that Idea and Ideology is detailed, Human Society, part 1 and 2. Proud in nutshell, there is a quite wide expressions from part 1 to part 21. And I one more thing coming to my mind, if you go through, what do you call, Aaj Ki Samasyaएं, the problems of the day. It's a wonderful small booklet you can finish in few hours, but you will have a feeling, I mean, why Proud is important and how we should go about it. So that is why I took Vachitrem Prakrita Dharma Samanam Na Bhavishyati, jo 8th slok hai, from Samaj Tattva. From there I have taken, and before that, I think I would like to go through certain slides which tells us that unless we know the concept, unless we know the science and psychology behind why Proud is given and why Proud is important and why Proud, till then it will not be justice to talk about Proud. So Didi, if you can make me co-host. Yeah. You are already co-host, Dada. Okay, Didi. So let me share my slides. Sure. Just give me permission. Thank you. Yes. होप बोलिएगा कि this slide visible है क्या दीदी, please? Yeah, Dada, it is visible. And I'm audible also? Yeah, it is very much clear. Yeah, thank you. So as I told you that we are going through a study circle, so I want to make it in a very clear through slide. And we all know that there are many laws across the world. Why this is not able to function is there is no morality in society. Whenever we discuss, we talk, we always talk, there is no morality. The fact is the morality is the base of Proud. And Master Sri Prabhat Ranjan Sarkar says that morality is the starting point. Being a good citizen, it's a mandatory, you must have a
moral principles in your life. So I wanted to tell you that what psychology is, so just I'll go through. अब द ग्रेट यूनिवर्स में एक इंट्रोडक्शन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब बाबा कहते, एक्चुअली हम जानते हैं कि सदियों से, इसी का ट्रांसलेशन है जो सामने दिख रहा है, कि सदियों से आध्यात्मिक और धार्मिक जो नेताएं लोग हैं, वो मानवता को ऐसा बताए हैं कि अंदर के सत्य को खोजने के लिए, फॉर द रियलाइजेशन, उसको कैसे पहचानेंगे अपने आप को, हु एम आई। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको दुनिया छोड़ देनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा मॉरल प्रिंसिपल का पालन करना चाहिए, बट एवरीबडी have discussed in detail, but nobody have discussed in detail the mundane sphere of the government, politics, economics, etc. So as development of these realms are not at all important. So, but P.R. Sarkar says, Baba says, the development of these realms are the very basics. So Sri Sri Anandamurti ji says, however, is the most unusual spiritual guide. His view is that this physical material world is neither an illusion, जिसको हम भ्रम कहते हैं, nor a great temptation, but the starting point of our spiritual journey. हम लोग पढ़े हैं अस्ति भाति आनंदम. So the very asti has to be guaranteed. So the very physical existence has to be guaranteed. That is what we call asti. Thus we must develop it even as we develop ourselves to make it a perfect base for a spiritual effort. इसलिए अपने भौतिक चीजों को भी स्ट्रांगली बनाना पड़ेगा यदि हम स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं तो. बाबा एक जगह लिखते हैं, मुझे अभी जस्ट याद आ रहा है, कि आध्यात्म जो है वो ऐसा तांत्रिक पक्षी है कि उसका एक विंग जो है वो है प्रौथ और दूसरा विंग जो है नियो ह्यूमनिज्म है. तो बिना इन दोनों के, हम लोग कहते हैं ना कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, तो जब तक पेट में रोटी नहीं रहेगी आप आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं. और इसीलिए प्रौथ की आवश्यकता है, इसीलिए अस्थि के लिए प्रौथ की बहुत ही नितांत आवश्यकता है. सो बाबा सेज thus we must develop it even as we develop ourselves to make it a perfect base for a spiritual effort. And this effort is not a struggle for a few related individuals. बाबा कहते हैं कुछ लोगों को फाइट करने की चीज नहीं है, एंटायर सोसाइटी को एक साथ इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा. सो ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स institutions should not impede our progress. Rather, they should be carefully planned and designed to accelerate our march towards perfection. Because that is the uddeshya of human existence, human life, and that is what we believe, and that is why Prauth is important. So now, जैसा मैंने बताया कि एक बाबा की किताब है, वो है प्रॉब्लम ऑफ द डे, आज की समस्याएं. उसमें जो पहला जो पॉइंट है वही बता देता है कि व्हाई प्रौथ, एंड दैट ओनली आई हैव टेकन. सो मेन जो प्रॉब्लम है समाज में, इवन महात्मा गांधी सेज द डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज अ टॉपिक ऑन दैट, गांधी एंड प्रौथ, गांधीज्म एंड प्रौथ. ही आल्सो सेज कि देयर इज अ इनफ रिसोर्स फॉर एवरीवन नीड but not for everyone greed. And here is the problem. So rational distribution is the cause of situation what we are facing today. और हम मानते हैं कि चाहे वो विलासिता हो या विपन्नता हो, मतलब चाहे विलासिता मतलब बहुत धनी लोग हों या बहुत विपन्न लोग हों, दोनों ही चीजें मानवता के लिए शत्रु हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में मनुष्य पाप करता है. एक मजबूरी में पाप करता है और एक जो है एक्सेस होने की वजह से वो पाप करता है. सो दीज आर द बेसिक्स. और हम एक और आजकल बात सुनते हैं, बहुत लोग चैंटिंग करते हैं, विशेष करके जो नेता लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो अक्सर बात करते हैं, हमारे पुराणों में लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम. जस्ट अपना कॉलर ऊंचा करने से नहीं होगा. व्हाट प्रैक्टिकली वी आर डूइंग फॉर दैट इज इंपॉर्टेंट. हाँ, ये सच है कि हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी चीजें ऋषि मुनियों ने एक्सपेक्ट किया था समाज का, ऐसा सपना तो देखा था, कम से कम ऐसी उम्मीदें तो रखी थी. बट जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहां तो ऐसी कल्चर भी नहीं थी कि लोग ऐसा उम्मीद रखें. तो ये बहुत बड़ी बात है. सो मेनी पीपल्स हैव
taken it as our global, to show our global outlook, and that is very important. So, problem of the day, the very small book is dedicated to Subhash Chandra Bose. In my language, he was the first Sadvipra in true sense of the term on this planet Earth, and especially for India. So Baba says that to the great hero Sri Subhash Chandra Bose, it's a Baba words, whom I do love and whom I do love even now. So he is dedicating this small book of 37 points, the problem of the day, to Subhash Chandra Bose. And I request you all to go through this book. This is very important, an eye-opener that why Proud is required. Sure. What is our psychology behind it? जो एक श्लोक है, पहला ही श्लोक है, हरर में पिता गौरी माता स्वदेह सह भुवनत्रयम. मतलब परम पुरुषा is my father, the supreme consciousness we call Parama Purusha is my father. Parama Prakriti, the supreme operative principle, is my mother, and the entire universe is my homeland. Unless this psychology we cover, we cannot understand Proud. That is why I thought we must share a few points. Baba says that the very meaning is extending that we are all the citizen of this universe, and the universe is the thought projection of the microcosmic mind. And it is in the extroversial and introversial phases of the cosmic imaginative flow that the creation, preservation, and destruction of all entities continues in it. इसीलिए हमने एक बहुत बात आ रही है, हम लोग गॉड क्यों कहते हैं? बाबा कहीं लिखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कहीं, जी फॉर जेनरेटर, जो कि हम लोगों को प्रोड्यूस करता है, ओ फॉर ऑपरेटर, जो हमारा पालन करता है, एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टर, जो कि सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है. दैट इज व्हाई दिस वर्ड गॉड इज वेरी मच रिजेंबल्स टू ब्रह्मा. एंड इसके लिए एक एग्जाम्पल है जो ये जानना जरूरी है कि व्हाई वी से दैट गॉड इज द ओनली अथॉरिटी एंड एवरीथिंग वी सी इज ऑफ हिज ओनली. Suppose you are imagining something, a green field in your mind. That is what Baba is explaining. When an individual imagines an object, then that person alone and no one else is the owner of that object. जब आप मन में कोई चीज इमेजिन करते हैं तो आप उसके ओनर होते हैं, न कि कोई और होता है. And that is an example. The imaginary human beings, if roams about in an imaginary green field, suppose, so the imaginer, जो उसकी कल्पना कर रहा है, and not the imaginary person, is the owner of that field. तो आप जो इमेजिन कर रहे हैं, आप ही उसके मालिक हैं. In same fashion, the universe is the thought projection of Brahma, the supreme entity. So the ownership of the universe lies with the supreme entity and not with imagined being, not we human beings. And this is the fundamental on which Proud is established. So none of the movable or immovable property, whatever you are seeing, imagining in this universe, belongs to any particular individual. It doesn't belong to any particular individual. Everything is a common patrimony of all, and the father of all is Brahma. So these are the fundamentals behind Proud. So the all living beings, not only humans, remember that we are not even in decimal in numbers as far as entire cosmos creation is concerned. So the all living beings can enjoy the rightful share of this property like members of a joint family in the Daya Bhaga system. जैसा हम अपने परिवार में मिल बांट कर खाते हैं, रहते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. तो परिवार जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रौध का. प्रौध कैसा होना चाहिए? जिस तरह का आपका अपना परिवार होता है. As member of a joint family, human beings should safeguard this common property in a befitting manner and utilize it properly. जिस तरह से परिवार के सदस्य अपने धन दौलत को संभाल के रखते हैं और उसका प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, मिस यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, इसी तरह से हमारा एक कर्तव्य होता है कि इस धरा की पे जितना भी, इस रादर यूनिवर्स में जितनी भी संभावनाएं हैं उनका हम संरक्षण करें एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें. And they should also make a proper arrangement so that everyone can enjoy it with equal rights
ensuring that all have the minimum requirements of life to enable them to live in a healthy body with a sound mind. So it is everyone's requirement and it's everyone's need has to be fulfilled. And we must not forget, even for a single moment, that the entire animate world is a vast joint family. Nature has not assigned any portion of this property to any particular individual. This is the loophole of the society. People are taking advantage. So Baba is saying that private ownership has been created by selfish opportunists, as the loopholes in this system provided them with ample scope to self-aggrandizement through exploitation. And that's what we are seeing today. When the entire wealth of the universe is the common patrimony of all living beings, can the system in which some rolls in luxury while others deprive of a morsel of food, shrivel up and starve to death bit by bit, be said to have the support of dharma? क्या ऐसे समाज को हम धार्मिक समाज कह सकते हैं जहां कुछ लोग लग्जरी में जी रहे हैं और जहां कुछ लोग अन्न के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हों? And our approach is not local, our approach is absolutely global. So in a joint family, जैसे हम अब बाब आते हैं, joint, as I told you, the small family of ours is an example of bigger family. So in a joint family, what happens? Every member is provided with adequate food, clothing, education, medical treatment, and amenities as per the individual needs, according to the financial capacity of the entire family. Isn't it happens in our family? It happens like same. If, however, मान लीजिए कि परिवार में जो कोई मेंबर झगड़ालू है या किसी कारण से कुछ चीजों को अपने जिम्मे रख लेता है, मोर ग्रेन रख लेता है, काफी अधिक कपड़े रख लेता है, बुक्स रख लेता है, मेडिसिन रख लेता है, then he or she requires, यदि आवश्यकता से अधिक रखता है, will that person not be the cause of distress to the other member of the family? बाबा बोलते हैं यदि कोई अपने जिम्मे में परिवार में कोई अधिक सामान रख लेता है तो दूसरों को क्या वो डिप्राइव नहीं करता है पर्याप्त होने से? अवश्य करता है. इन सच सर्कमस्टांसेस, ऐसे कंडीशन में उसका जो कार्य है वो निश्चित रूप से धर्म के विरुद्ध है और एंटी सोशल है. एंड टू एक्युमुलेट मैसिव वेल्थ they reduce others to skin and bones. That is what he's talking of. Capitalist, he has used a very, very strong words. He said that they compel others to wear rags and to increase their own vital strength. They suck dry and vital juice of others. Baba's words are very, very strong words. So a member of joint family cannot be called a social being if he or she does not possess the sentiment of oneness. परिवार का एक सदस्य यदि और परिवार के साथ एक मन हो करके नहीं चलता है और मेंबर्स के साथ, तो he or she does not want to accept the lofty ideal of joint rights and the principle of rationality. यदि वो परिवार के और लोगों के साथ नहीं चलना चाहता है, according to the true spiritual ideology, the system of private ownership cannot be accepted as absolute and final. Baba is very careful when he's choosing the word. He's saying that private ownership, today capitalism, cannot be accepted as an absolute and final, and hence capitalism cannot be supported either. So at the end, but here I would like to say one more thing that Baba is saying कि जिनको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, we are against the capitalism and not an individual. This point should be very clear in everyone's mind. That they have got, Baba is saying that they are the what do you call, मतलब जो बोलते हैं naughty children of Parama Purusa. They have deviated from dharma, so they should be brought online. It is not that you have to hate them. That is very important. I quote in the end when Baba say what Baba is saying, and that is why the very vision of Anand Marg is. Kindly mute TV if someone is disturbing. So
the Baba used to give us Asirvad at every DMC. We all know. He used to say the mantra. He has corrected that mantra. It's not the original which was available. He says the Sarve Atra Sukhinah Bhavantu, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Na Kaschit Dukh Mapnuyat. And then Om Shanti. So here the word is, he let everybody be happy. सब लोग सुखी हों. बाबा कहते हैं सब लोग रोगों से मुक्त हों. सब लोग हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें. See the positive side of everything. किसी भी मनुष्य को विवश परिस्थिति में पड़कर ड्यू टू त्रुटिपूर्ण सामाजिक दर्शन या त्रुटिपूर्ण अर्थनैतिक के दर्शन के कारण किसी बेकसूर बेसहारा मनुष्य को हाहाकार कर कष्ट भोग करना नहीं पड़े. And this is why Praut is required. So the Praut is a panacea for the integrated progress of human society. And with this, I hope, that we have understood why Praut is required. Now we will go to the sloka, the economic principles of a 5th chapter. But we will start with the 8th sloka of Samaj movement. I hope my previous slides were worth before we start the talk. So, Vaichitrayam Prakrit Dharma Samanam Na Bhavishyati. ये बड़ी खूबसूरत बात है. बहुत लोग इसके पीछे पॉलिटिक्स करते हैं, सबको बराबर मिलना चाहिए. एंड शुरू में ही मैं बता देता हूं कि why communism failed. The slogan was so powerful. And then what they did is, you all know that Marx gave antithesis, of course, but he did not give the solution. He did not give the synthesis of it. So the people applied it as per their whims and fancies. And where communism ended, we all know today. So we will not go in that part. So वैचित्रता जो है प्रकृति का धर्म है और इसको हम नकार नहीं सकते. तो विचित्रता ही प्रकृति का धर्म है. सृष्टि जगत में कोई भी दो वस्तुएं तादात्म्य रूप से एक समान नहीं होती हैं. दो शरीर एक नहीं है, दो मन एक नहीं है, दो अणु या परमाणु भी एक नहीं है. यह विचित्रता ही प्रकृति का स्वभाव है. यदि कोई सब कुछ को समान करना चाहते हैं, वे ऐसी दशा में ऐसा करना व्यर्थ होगा, क्योंकि यह प्राकृतिक धर्म विरोधी बात है. केवल प्रकृति की अव्यक्त अवस्था में ही यह सब संभव है. आप समझ रहे हैं ना, अव्यक्त अवस्था मतलब जब निर्गुण ब्रह्म के स्टेज में जहां प्रकृति रहती है, अनएक्सप्रेस्ड रहती है, वहीं यह संभव है कि सब लोग बराबर हों. आफ्टर एक्सप्रेशन दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. तो बाबा कहते हैं केवल प्रकृति की अव्यक्त अवस्था में ही सब कुछ समान होता है. इसलिए जो सबको समान करने की बात करते हैं, वे सबको ध्वंस करने की बात करते हैं, क्योंकि दिस इज एंटी धर्मा, एंटी नेचर. एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई कम्युनिज्म कोलैप्स्ड. आप कल्पना करिए, मन में एक बात आ रही है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, कि हर एक आदमी, आपको पता है कि सबका मेंटल लेयर अलग अलग है. और बाबा एक जगह कहते हैं, मुझे याद आ रहा है, कि मनुष्य अपने संस्कार के अनुसार शरीर तथा मानस संरचना पाते हैं. और जिस मनुष्य का कर्म जैसा था, उन कर्मों की तरंगों की जो समष्टि है, वही है उनकी मानस तरंग, अर्थात उनकी संस्कारगत तरंग. और उन्हीं संस्कार के अनुसार उनको मन मिलता है. और मन में जो क्या बोलेंगे उसको, जो एक्टिव नहीं, संस्कार को भोग नहीं सका है, उसको भोगने लायक, उसको प्रॉपर शरीर की संरचना मिलती है. इसलिए मनुष्य में फिजिकल भेद है, मेंटल भेद है. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. तो मैं बोल रहा था कि इसके अनुसार हर आदमी, कोई, हम जब बात करेंगे शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और विप्र की, तो माफ करिएगा, आप सब लोग जानते हैं, हम इसको जातिगत जन्मगत वर्ण व्यवस्था नहीं कहते हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ द मेंटल कलर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. जी. So with a different kind of people are there in society as per their sanskaras, previous deeds and their sanskaras. So obviously they will not be identical. तो वहां क्यों फेल हुआ कि पहले तो वो लोग जितने भी धनी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सबको, आप सबको पता है, आई शुड नॉट एक्सप्लेन, मार काट के बराबर कर दिया.
तो अब उस व्यवस्था को चलाएगा कौन? सो एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट। शूद्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है, शूद्र मानसिकता का मनुष्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्षत्रिय मानसिकता का मनुष्य समाज मूवमेंट में इंपॉर्टेंट है, उतना ही वैश्य की भी प्रधानता, वैश्य की प्रधानता में सॉरी वैश्य की उपयोगिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और विप्र की उपयोगिता, इंटेलेक्चुअल्स की उपयोगिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इस बात को जो लोग नहीं समझते हैं, इस पे पॉलिटिक्स करते हैं, दे आर वो दुश्मन है समाज के। ये आपको बात को मानना पड़ेगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई कम्युनिज्म फेल्ड बैडली। तो कहते हैं विचित्र मीन्स डाइवर्सिटी, इसको एक एक स्प्लिट कर लेते हैं। एंड वैराइटीज आर प्रकृति धर्म, नेचुरल लॉ है। धर्म मीन्स कैरेक्टर, वी नो दैट द क्वालिटी ऑफ I don't think we should go in that detail to give example of dharma. And samanam na bhavishyati means identicality shall never be there. Remember, यहाँ पर जब बाबा कहते हैं कि समानम न भविष्यति, he is not talking of similarity, he is talking of identicality. It cannot be identical. Similarity तो होता है, जैसे मेरे को मन में बात आ रही है, कई बार माताओं को मान लीजिए जुड़वा बच्चे या बच्चियां पैदा होते हैं, बिल्कुल देखने में एक तरह के रहते हैं, उनको कपड़े भी लोग प्यार से एक ही तरह का पहनाते हैं, है ना, क्योंकि अच्छा लगता है। बट जब वो बड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि उन्हीं में कुछ की लाइकिंग अलग होती है, कुछ की डिसलाइकिंग अलग होती है, क्योंकि वो सब जीव अपने एक शरीर में दो संस्कार नहीं रह सकता है। शरीर अलग है, इसका मतलब उनके संस्कार अलग हैं ही जी। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी शुड नो दैट ये प्रकृति का धर्म है। And the one who propounded Prout, that is Sri Prabhat Ranjan Sarkar, is saying that very nature, that is the character of the creation, is it creates varieties. ये उसकी प्रकृति है। You won't find two things identical in this world. For example, you must have also noticed that though there are almost 7.9 billion people on this planet, but आप लोगों को पता है, just I have this is thumb impression, none thumb impression matches. Look at the beauty of it. How you can say that? So these are the gross proof. Of course, when we'll go to the microvital level, there are much more proofs, but it's the gross level proof that identicality is not the nature law, and each has a unique thumb impression. So Prout is a scientific. It says identicality shall never be. One who says we shall make all equal is simply fooling us, or he is not aware, or his awareness is very poor. फिर यहाँ एक बात आती है, even if you give equal कुछ एग्जाम्पल हमको याद है, विमलानंद दादा अपने क्लास में देते थे। हर मनुष्य की मानसिकता अलग अलग है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं जन्मगत मानसिकता की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटल कलर की मानसिकता की बात कर रहा हूं। सॉरी। यदि आप किसी को सेम मान लीजिए 5 लाख रुपए 5 मेंटालिटी के आदमी को दे दिए और आप 1-2 हफ्ते बाद उनसे मिलेंगे तो पता चला कि जो शुद्र मानसिकता का, मानसिकता बोल रहा हूं, जन्मगत नहीं, मानसिकता का जो व्यक्ति है उसको खा पी के उड़ा देगा और फिर गालियां देता रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे गवर्नमेंट ये नहीं देता है। और जो वही क्षत्रिय है, मानसिकता है, वो क्या करेगा, वो अपना घर द्वार बनाएगा, बच्चों को थोड़ा फिजिकली फिट होने के लिए मिलिट्री में भेजने के लिए वर्जिश कराएगा। ये मानसिकता की बात कर रहा हूं मैं। तो वो उस तरह से अपना कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्सपेंडिचर करेगा, घर बनाएगा अपना। और जो क्या नाम है, विप्र मानसिकता के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी किताबें खरीदेंगे, अच्छे अच्छे चीजें ज्वाइन करेंगे अपना मेंटल इवोल्यूशन के लिए। और वहीं पर जो वैसे वो क्या करेगा, बड़ा सिंपल है, 9 का 99 करने की कोशिश, spend somewhere so that money multiplies. So here we see that even the human nature is different. So this is just to prove that एक तरह से हम सबको एक लाठी से नहीं। बट अब आगे की बात है कि this does not mean, here is a very important point, this does not mean that inequality is blindly supported by nature or Prout. This is very important line. Sharing, caring for each other,
is ingrained in human and is key to the human survival. हम अकेले कभी जिंदा नहीं रह सकते इस धरती पर, ये मनुष्य को समझना होगा, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो। तो ये बात सब जानते हैं, I will not go in detail of that. So studies have also suggested that human minds are averse to inequality. किसी को inequality पसंद नहीं है, gross inequality पसंद नहीं है। मतलब वो inequality जहां कोई खा के मर रहा है, कोई खाने भी ना मर रहा है, ये किसी मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है। So therefore, unbridled, that is belagam, अनियंत्रित, निरंकुश, increasing inequality is exploitative. तो यदि निरंकुश रूप से यदि असमानता, I am talking basically here of economic असमानता, यदि समाज में बढ़ रही है, निरंकुश रूप से बढ़ रही है, अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है, बेलगाम रूप से बढ़ रही है, so increasing inequality is exploitative. We do not support that. So starting from the guarantee of the minimum needs, that is what Prout comes in a very strong foot forward. That I was saying, yes. So starting from the guarantee of the minimum needs, the society has to slowly move towards reducing the inequality. So पहली जरूरत है कि सब लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स की गारंटी हो। अब मैं जब बेसिक रिक्वायरमेंट्स की गारंटी बोल रहा हूं तो यहाँ पर मुझे एक और बात याद आ जाती है। बाबा कहते हैं, एक चैप्टर है समथिंग इकोनॉमिक रिवोल्यूशन प्रोबेबली, ही सेज दैट सी वी डोंट वांट दैट समबडी शुड गिव अस डोल आउट्स, जिसको बोलते हैं ना आजकल बहुत रेवड़ियां जो बढ़ती हैं, तो बाबा इज टोटली अगेंस्ट दैट। वी वांट 100% employment of the people. Why? Because he should earn his livelihood so that वो सिर उठा के समाज में रह सके। किसी को जब आप दान दे रहे होंगे तो एक तो पंगु हो जाएगा मेंटली और वो आपका गुलाम हो जाएगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। And the today's hypocrites leaders are utilizing, rather misutilizing this psychology by providing dole outs to the mass. No, we recommend for 100% employment and not the dole outs. That is why we are here basically we are different. So it all depends on the collectively decided, depending on the technology available at the time and total wealth of the society. So, or the profit made by the organization. और ये आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। If the CEO is getting 10, then the ordinary worker must get 1. So the ratio should not go beyond the limit of 1:10. So these are the starting point of a healthy human thinking in some corner of the parts of the world. So the Prout proposes model that balances the need of humans to be unique while also being averse to gross inequality. A बहुत important point है. So, and Prout is a synthetic approach, संश्लेषणात्मक approach है Prout. And Prout always stands for the cause of exploited people, irrespective of race, nationality, religion, caste, creed, and always opposes all type of exploitation. But as poverty is the main problem in the world today, Baba says, that is why Prout gives top priority to opposing economic exploitation, as this affects the livelihood and the very existence of the people. That's why it is important. So here I wanted to say the Vachitrayam Prakriti Dharma was the very basics before we go further in economy. Oh my God, okay. So Didi, how long I can talk? So yeah, Dada, we have time. Okay. 4:30, yeah. Yeah, okay. I think I explained much more. So, but it was important. Dada, very nice class is going on. हम लोगों को पता ही नहीं चला टाइम कैसे पास हो गया और even I did not find. भी नहीं है कि बंद हो. Yeah. So the पहले जो मैंने स्लाइड्स दिखाया वो हमारी मानसिकता को प्रिपेयर करता है. Unless we have this kind of understanding,
तो हम खुद ही बोलेंगे कि प्रभु एक इल्यूशन है, unless we have that kind of, और वैसी साइकोलॉजी में प्रतिष्ठित होने के लिए one have to have a spiritual base. So Praut can be implemented only by Sadvipras. And you know that Sadvipras, the Aadhar, the very base is spirituality. So Praut इंप्लीमेंट ही किया जा सकता है सदविप्र के द्वारा, और किसी के द्वारा वो किया ही नहीं जा सकता है, बिकॉज टुडे इन द एंटायर वर्ल्ड द सिनिसिज्म इतना रैम्पेंट है, लोग ये मानने को तैयार नहीं कि समाज में कोई अच्छे लोग भी हैं। लोग बोलते हैं, अरे तुम लोग कैसे ऐसे काम करते हो, तुम लोग तो समाज में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मतलब मनुष्य ये मान के चला है कि मनुष्य ऐसा अच्छा हो नहीं सकता, विच इज आई मीन वेरी ड्रेडेड काइंड ऑफ साइकोलॉजी, यू नो। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर में हम सोचते हैं कि हम लोग को आना चाहिए फ्रॉम वेयर, तो वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति वाज अ बिट इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई टुक इट फ्रॉम द सोसाइटी एंड दिस वी हैव गॉन थ्रू। यस, सो द 9th chapter again, I would like to finish this only and then so yugasya sarva nimnamana prayojanam Sarvesam Vidhayam. How beautiful it is. It talks, let me go here. Okay. Yes, it is here. So Yugasya Sarva Nimnaman Prayojanam Sarvesam Vidhayam. So युग की सभी की जो निम्नतम आवश्यकताएं हैं वो सुनिश्चित होने चाहिए। ये मेरा पहला प्रिंसिपल कहता है। मतलब अगेन बाबा उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रकृति ने किसी के नाम नहीं लिख दिया है कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी में, इसको पढ़ देता हूं अच्छा रहेगा, कि हरर में पिता गौरी माता स्वदेश भुवनत्रयम्। इसलिए इस ब्रह्मांड की प्रत्येक संपदा प्रत्येक मनुष्य की साधारण संपत्ति है, किंतु विश्व की कोई वस्तु 16 आना समान नहीं हो सकती है। इसीलिए मनुष्य की जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी व्यवस्था सबों के लिए करनी होगी, अर्थात अन्न की, वस्त्र की, चिकित्सा की, सॉरी, वास गृह की, शिक्षा आदि की व्यवस्था सबके लिए करना आवश्यक कर्तव्य है। मनुष्य के ये जो निम्नतम आवश्यकताएं हैं और ये प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं, दैट इज व्हाई आवर फिलॉसफी इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। सो इट्स अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, दैट इज व्हाट यू कॉल प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। सो इट्स अ प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट चेंजेस विद टाइम। जैसे सवारी गाड़ी की दृष्टि से किसी युग में मनुष्य की निम्नतम आवश्यकता बाबा कहते हैं यदि एक साइकिल हो सकती है, तो किसी युग में वायुयान भी हो सकता है। जिस युग में मनुष्य को जो निम्नतम आवश्यकता होगी, जिस युग में, उसकी व्यवस्था अवश्य ही करनी होगी। दिस इज अ मैंडेट। सो युगस्य सर्व निम्नमान प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम। सो युगस्य मीन्स ऑन एन एजेस, Sarvanimnaman Prayojanam means the minimum necessities. Sarvesam means to all, not humans, to all. The Baba is very choosy in words. To all living beings, not humans only. So Vidheyam means by law, by constitution, the minimum requirement of an age should be guaranteed to all. That is why our 9th chapter says. Here something came to my mind and put it in slide. That it is not that human today do not understand this. They understand. That is why if you go to the Indian constitution, the Article 21, it says that right to life to be redefined. This is my writing, that right to life should be redefined. What they said, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. So हम उस लॉ की बात ही नहीं कर रहे। If you are making a statement, right to life, you can understand the 5 minimum fundamentals requirements are the asti. The requirement is for the existence of a healthy body and mind. Mind तो छोड़िए, एटलीस्ट हेल्दी बॉडी के लिए तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है। तो इसी तरह से एक दूसरा मेरे मन में आया था कि so the article, what it says is, provides a detailed analysis of the Article 21A of the Indian Constitution, which provides for the free and compulsory education also. But you know that it has been revised for the age of 14 only. But it is a mandatory. But where it is mandatory?
There are many people uneducated in our society. So here I wanted to only show that people have this kind of feeling. The intelligence से understand कि ये जरूरी है, education जरूरी है. It is not that only Proud says. But लोग अपने स्वार्थ को त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं. इसीलिए again Mahatma Gandhi's statement that there is enough for everyone needs, but not for everyone's greed. और बाबा भी यही बोलते हैं कि the physical wealth has its limitations, though it is enormous, but that too becomes too limited when someone takes it the major share. Then it becomes too limited. So the Constitution of India does not expressly, देखिए बहुत इसमें साफ लिखता है, किसी का कमेंट है, the Constitution of India does not expressly recognize right to health as a fundamental right under part 3rd of the Constitution Fundamental Rights. तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूं कि नाम के लिए तो हम लोग थोड़ा थोड़ा टच किए हैं, the right to life, right to education, right to health, but the fact is it is not our fundamental right. So things are missing and people are clever enough to define so that you cannot claim. But what we say that it should be vidheyam, through constitution, it should be guaranteed. So that if you are not provided, you can file case in court, which you cannot do today. तो क्या आदमी क्या हवा पी के जिएगा? If there is a right to life, so there has to be some an excuse behind how people I can ensure that people will be leading a wonderful life. So the entire wealth of the universe is the common heritage of all. पहले ये समझना बहुत जरूरी है. So the minimum requirements of life should be made available to everybody in order to, in other words, food, clothing, I'm repeating, medical treatment, housing, education must be provided to all. So the minimum requirements of human beings, however, change according to the change in ages. For instance, as I have already told you, so Vidheya means it should be guaranteed through constitution. That is very important here. So the society is made of individual and is being managed according to the law of the society. Sometimes they are written in law, taught in business school, and sometimes they are unwritten. Like here it states that medical is not guaranteed, is not as a right. So a new rule of Vidheyam and Vidhi is needed. Constitutionally it is needed to ensure the minimum requirements of everyone need to be made. We are the same line, but we are different. हम तो यही बोलेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 21 है उसमें आप अमेंडमेंट कर दो ना, इसको आप पूरा डाल दो ना, उसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है. But they are afraid, so they cannot do it. If they will do it, capitalism will not survive here. So these are the reasons. So therefore, Economic Sutra number 9 of Proud says that in the very constitution, it should be inscribed that the minimum requirements of every citizen is guaranteed. Now, how that can be implemented in a way that it is not in the form of dole-outs, as I already told. So, usually happens in the society, there we have to help for you, and here is your food packet. आजकल होता है ना 5 kg अनाज बांटा जा रहा है ना, तो again and you get another food packet, ये भी गारंटी है, मतलब बोला जा रहा है. Proud does not think like that. This system can be paralleled with slavery or like a prison system. So the basis remains that the minimum requirements will be guaranteed. That is only our very fundamental line. So the guarantee, the minimum requirements, the method to ensure purchasing capacity. This is again a wonderful thing we bring, Baba brings. We have to ensure the method of ensuring the purchasing capacity.
every individual will have sufficient purchasing capacity to be able to buy at least food, clothing, housing, medical treatment, and education. An alternate is in the form of economic democracy. That is what we call economic democracy, and more precisely, if I call it, this is our people's economy. We have four tier economy, and this comes under people's economy. So the people's existence has to be guaranteed. So how to implement this economic democracy? Detail about this, ठीक है, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ सकते हैं. So in Prout, looking at the current time, 5 aspects have been considered the minimum requirements, जो कि हम लोग आज बात कर चुके हैं. And but this has to be need to be fixed through purchasing capacity, not through dole outs. That is again the fundamental basic line I'm repeating 3rd time. So state won't say you eat chapati in the evening and rice in the afternoon. Who are you to say this? भाई हमारी परचेसिंग कैपेसिटी है, हर आदमी का कुछ और कुछ भी खाने का मन करता है. Why I should behave like slave or a prison person? Or one day you will get खिचड़ी और another day पायसम, जैसे कि आजकल हमारे स्कूल्स में चलता है ना, मिड डे मील में यही सब चलता है. अब आप खिला कुछ और रहे हैं, बच्चे को मन कुछ और कर रहा है. So this is psychic exploitation. So no, it will become like feeding cattle. ये तो जानवरों को जिस तरह से हम खिलाते हैं ना, भूसा डाल दिया नाद में, अपना सिर नीचे कर करके खा रहा है, जो मिला वो खा रहा है, उसको अपना राइट ही नहीं है चूज करने का. So it is like a cattle. You are feeding them whatever you like. So the freedom of every human value will be lost by doing this, and it is being lost. So people should give the purchasing capacity as their rights, sufficient purchasing capacity so that they can buy food of their choice, can wear clothes of their choice, they can have housing of their choice, education of their choice, and they can have health care of their choice. Though we call there should be uniform, 2 things should be free. You know that Prout advocates for, see, मैं अपनी सैलरी से अपने पसंद का खाना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, आदमी घर जिंदगी में एक बार ही तो बनाता है. तो these are the requirements. कपड़े में कितने खर्चे होते हैं? मनुष्य साल में 2 जोड़ी कपड़ा, एक दीपावली एक होली के जो पुराने जमाने का जो सिस्टम है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उतना ही ना पहनोगे. और रोजमर्रा की जो बात है वो खाना, तो आदमी कितना खाना खाएगा? आज जो होड़ लगी है एक्यूमुलेशन करने की, ये मात्र इसलिए है कि मेरा कल सुरक्षित नहीं है. ये जो साइकोलॉजी है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे एक आम लेबर हो या एक आम आदमी हो, उसका कल की गारंटी नहीं है. और उसको सपने हम क्या दिखा रहे हैं टीवी में? वो सपने देख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के, जो सो कॉल्ड चकाचौंध के टीवी में प्रोग्राम्स देखता है, एडवर्टाइजमेंट देखता है, मूवीज देखता है, जिनका भारत की जमीन के सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है. सो इसीलिए मनुष्य जो है 99 के चक्कर में भाग दौड़ रहा है. मैं तो कहूंगा, बाबा भी कहते हैं, पागल कुत्ते की तरह. So people should be given the purchasing capacity, sufficient purchasing capacity, so that they can have a food, clothing of their choice. And we advocate that medical and education should be not only free, it should be uniform. एक जो टॉप मैन को जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है, वही मेडिकल फैसिलिटीज यदि हमारे 1 वोट की कीमत और उस बिलियनर के 1 वोट की कीमत यदि सेम है, तो हमारी व्यवस्थाएं भी कम से कम बेसिक मिनिमम नीड्स की, I mean education I must get at par with them, medical facilities I must get at par with them. But here I will again add something is coming to my mind, that when you talk of rights, never forget your responsibility. So you have to have your moral duty to make your lifestyle in such a way that you are a healthy citizen in society. That is your duty. You cannot eat anything, eat, drink, and make mess of your life, and government becomes responsible for your health.
that is this irresponsible behavior. So that is also we have a provision in Prabhu. People cannot say that, oh, मैं तो बीमार पड़ के आ गया and now you have to take care. So every corner people should be tightened. So if the cost of a living, suppose example के लिए, यदि एक आदमी को मेरा कहने का मतलब है मेडिकल और एजुकेशन यदि फ्री हो जाता है, तो प्रभु कहता है कि मनुष्य को खाने के लिए, कपड़े के लिए और जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एवरी गजेट्स involved in education is the part of education. Remember this. Whether it's a laptop, whether it's anything, books, everything is a part of education. It has to be free. It is not that बाप जो है अपने और माँ जो है अपने सैलरी से काट कर बेटे को लैपटॉप लेना है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, ये वाला लैपटॉप लेना है, इतना कर. So that should not be the botheration. Because we have to create a healthy citizen physically and mentally. एक कंट्री कब हेल्दी हो सकता है? जब उसका हर व्यक्ति हेल्दी हो. और ये समाज का दायित्व है, ये नेशन का दायित्व है, केवल माँ बाप का दायित्व नहीं है. And that is why we recommend that education has to be uniform and free for all. That is the reason behind it. So that our nation, our society becomes strong in a very short time. तो मनुष्य की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हमको उनके लिए उनकी योग्यता के अनुसार उनको सैलरी प्रोवाइड करना है. There will be differences that I have told in the very beginning, that वैचित्र्यम प्राकृत धर्म. भाई आपकी योग्यता क्या, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई हाहाकार करके बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कमी के कारण उसका जीवन विपन्न हो रहा है. ये स्थिति कभी नहीं आनी देनी चाहिए. उसको कहते हैं स्वस्थ समाज. युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम. युग की सभी की निम्नतम आवश्यकताएं सुनिश्चित होनी चाहिए. इसका भावार्थ है हरर में पिता गौरी माता स्वदेशः भुवनत्रयम्. इसलिए इस विश्व ब्रह्मांड की प्रत्येक संपदा प्रत्येक मनुष्य की साधारण संपत्ति है, किंतु विश्व की कोई वस्तु 16 आना समान नहीं हो सकती. इसलिए मनुष्य की जो निम्नतम आवश्यकता है उसकी व्यवस्था सबों के लिए करनी ही होगी. अर्थात अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, वासगृह, शिक्षा आदि की व्यवस्था सबके लिए करना आवश्यक कर्तव्य है. मनुष्य की ये निम्नतम आवश्यकताएं प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं. सवारी गाड़ी की दृष्टि से किसी युग में मनुष्य की निम्नतम आवश्यकता एक साइकिल हो सकती है और किसी युग में वायुयान भी हो सकता है. जिस युग में मनुष्य की जो निम्नतम आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था अवश्य ही करनी होगी. द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एज शुड बी गारंटीड टू ऑल. हरर में पिता गौरी माता स्वदेशः भुवनत्रयम्. दैट इज supreme consciousness is my father. The supreme operative principle is my mother. And the three worlds are my homeland. The entire wealth of this universe is the common patrimony of all. Though no two things in this universe are absolutely equal, so the minimum requirements of life should be made available to everybody. In other words, food, clothing, medical treatment, housing and education must be provided to all. The minimum requirements of human beings, however, changes according to the change in ages. For instance, for conveyance, the minimum requirement may be a bicycle in one age and an aeroplane in another age. These minimum requirements must be provided for all people according to the age in which they live.